Good afternoon, everyone. Uh, Today, I would like to make aware you some of the income tax amendments which are applicable from 1st of April 2023. So, the first amendment has been made in new tax regime. Uh, New tax regime, the charging section of new tax regime is 115 BAC on individual and HUF. Earlier, it was applicable on individual and HUF, but from 1st of April 2023, it is applicable on association of persons or body of individuals as well. Earlier, standard deduction of rupees 50,000 and family pension was not allowed for computation of income under new tax regime, but now it is allowable. Uh, and the slab rates for new tax regime has also updated, which are uh, up to rupees 3 lakh. The rate is nil. From 3 lakh to 6 lakh, the rate is 5%. 6 to 9 rate is 10%. 9 to 12 rate is 15%. From 12 to 15, 20%, and above 15 lakh, it is 30%. The next amendment has been made in rebate under section 87A. So the limit has been increased to rupees 7 lakhs. Earlier, it was a limit of rupees 5 lakh. Next amendment is the new income tax regime will be regarded as a default tax regime on the portal. Moving to further, moving to further, amendment has been made on life insurance policies. The amendment is, it is proposed to tax income received from life insurance policies issued on or after 1st April 2023 if the aggregate annual premium exceeds INR 5 lakh, except if received on death of the assured. Earlier, the limit was 2.5 lakhs. Next amendment is leave encashment. The exemption limit for leave encashment received on retirement by non-government salaried employees increased to rupees 25 lakhs from the current rupees 3 lakhs. And for government, leave encashment is fully exempt at retirement. Next one is capital gain deduction on residential property. In new tax regime, the maximum deduction that can be claimed by the assessee under section 54 and 54F is rupees 10 crores in respect to all long-term gains. While in the current regime, there was no maximum limit, as entire sales consideration can be claimed as deduction. Next amendment is interest on housing loan not treated as cost of. 54 and 54F में, is it the exemption which is limited to 10 crore or the property which is 10 crore? What would be the implication of this? The exemption limit is 10 crores. Exemption limit? Yes, sir. Both under 54 as well as 54F. दोनों में same है. Yes, sir. Any other views on this? Is it a short view as in this? Because 54 and 54F work differently. This mistake has been committed by CBDT. उन्होंने वो कैप डाल दिया 54 में, उसी को कट पेस्ट करके कॉपी कर दिया 54F में भी. So what is going to be the implication of that? Has anybody seen that? किसी ने analyze किया उसको? Can I proceed further? Yes, anybody would like to say something on this? Nobody. अरे भाई, हो गए इतने सारे लोग हैं, सब सो गए क्या? क्या है कि 54 में what they have said is if the cost of the new property is more than 10 crores, then
रेजिडेंशियल हाउस परचेज करना है उसके इक्विवेलेंट आपके कैपिटल गेन्स एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, ठीक है. So you may have sold the old residential house for say 15 crores. आपके कैपिटल गेन्स जो है वो 9 करोड़ हैं और आपने 9 करोड़ 10 करोड़ 11 करोड़ किसी भी वैल्यू का हाउस ले लिया. अगर आपके कैपिटल गेन्स जो है वो 10 करोड़ से कम है और आपने न्यू रेजिडेंशियल हाउस जो है 10 करोड़ या उससे ज़्यादा का ले लिया तो आपके 100% कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएंगे. प्रॉब्लम उस केस में आएगी जहाँ पर आपका कैपिटल गेन 10 करोड़ से ज़्यादा है. सपोज करो आपने कोई 50 करोड़ की प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल हाउस सेल किया, उसमें आपका कैपिटल गेन जो आ रहा है वो सपोज करिए कि 30 करोड़ रुपए आ रहा है. अब उस केस में अगर आपने 50 करोड़ की भी प्रॉपर्टी ले ली तो खाली 10 करोड़ काउंट करेंगे तो होगा ये कि 30 करोड़ में से 10 करोड़ एग्जाम हो जाएगा, 20 करोड़ कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा. 54 में तो ये सीधा वर्क करता है. अब प्रॉब्लम आ जाती है इन द केस ऑफ 54F. 54F में क्या है कि आपको नेट कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना होता है. बिकॉज इफ आई रिमेंबर करेक्टली आपके पास लैंग्वेज है सेक्शन की? No. तो अगर if I remember correctly, the language of the section जो है उन्होंने ये नहीं कहा कि exemption would be limited to 10 crores. They have said that the new house which has been purchased, any amount over 10 crores will be ignored. So that means will not be considered for the purpose of deduction. अब इसमें सारी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी. अब होगा क्या, सपोज करिए कि अगर आपने 50 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल करी और उसमें 30 करोड़ का आपका जो है कैपिटल गेन है. अब उस केस में क्या होगा कि अगर मैंने 50 करोड़ की भी प्रॉपर्टी ले ली तो सिर्फ 10 करोड़ कंसिडर करेंगे. अब 10 करोड़ अगर सिर्फ कंसिडर करेंगे तो उसका अगर प्रोपोर्शनेटली अगर निकालेंगे उसका तो 10 करोड़ अगर नई प्रॉपर्टी कंसिडर करेंगे देन इट बिकम 30 अपॉन 50 ऑफ 10. सो दैट मींस कितना रह जाएगा वो 20% और उसके बाद 31 उसको करेंगे तो वो व्हाटएवर 60% के आसपास आएगा. 60% आएगा तो आपका 6 करोड़ की एग्जेम्पशन मिल जाएगी और आपका 54 की एग्जेम्पशन सिर्फ 6 करोड़ की मिलेगी, 10 करोड़ की नहीं मिलेगी. देयर कैन बी अ सिचुएशन कि जहाँ पर आपने प्रॉपर्टी सेल करी है 12 करोड़ की और कैपिटल गेन आपका सिर्फ 1 करोड़ का. अब वहाँ आपने अगर 12 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली तो आपका सिर्फ 10 करोड़ को काउंट करेंगे और 10 करोड़ काउंट करेंगे तो उसको क्या करेंगे 1/12 हो जाएगा उस केस के अंदर. तो आपका 10 करोड़ का वैसे खाली 1/12 एग्जाम्प्ट होगा तो आपका खाली 80 लाख रुपए एग्जाम्प्ट होगा. Rest would become taxable. So that would really depend upon the facts of the case. इस केस में ये कहना कि भाई exemption has been limited to 10 crore would not be right. It is a calculation. 54 में तो अप्लाई हो जाएगा लेकिन 54F में calculation would change मेरे हिसाब से. But anyway, इसको भी आप examine करके you can next week में आप उसको update कर देना. Okay. Okay. Yes. बताइए और So the next amendment is interest on housing loan not treated as cost of improvement. Interest on housing loan claimed as deduction while computing taxable income shall not be included in cost of acquisition improvement for the purpose of capital gain, as it would amount earlier in the current regime. Double taxation of interest on housing loan is allowed. So in order to deter this one, this amendment has been inserted. Next one is TDS on payment of interest on listed debentures to a resident. As per section 193 of the Act, TDS on payment of any income to a resident by way of interest on TDS on payment of any income to a resident by way of interest on securities, so the TDS would be deducted on that amount. Foreign remittance. Deduction will not be allowed on account of interest. वो सबको क्लियर हो गया वो क्या है? Cost of improvement में ऐड नहीं होगा. Next amendment is on foreign remittances for overseas tour packages. Rate of TCS has been increased from 5 to 20% for purchase of overseas tour programs, and it is without any threshold. In the current regime, the threshold was rupees 7 lakhs. So the next amendment has been made in section 43B. As per this amendment,
any sum payable by the assessee to a micro or small enterprise beyond the time limit specified in section 15 of the MSME 2006 shall be allowed as deduction only on actual payment. Section 15 of Micro MSME Act says that if there is any agreed date of payment, then maximum 44, if there is any agreed date of payment, only 45 days shall be allowed for the payment by buyer to supplier. But if there is no payment agreed, then only 15 days shall be allowed for the payment. Next amendment is reducing the time period for furnishing TP report. A TP report stands for transfer pricing report, and the time period for furnishing the TP report has been reduced from 30 days to 10 days from the receipt of notice. Okay, thank you. Maybe इन्होंने गलत लिख दिया. इसमें रिसिप्ट ऑफ नोटिस का ही लिखा हुआ है. थैंक यू. Yes, any करते थे उसके बस मेरे हिसाब से दोनों एक्चुअली क्या है कि ये जो इंटरेस्ट अलाउ होता है कैपिटल गेन में से पहला नंबर बात तो ये है कि वेदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एसेट पे सपोज करो मैंने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी बैंक लोन लेकर और वो बैंक लोन लेके जो मैंने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करी है उसका मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ. अब आप लोगों ने AS 16 पढ़ा होगा. व्हाट आर AS 16 से सॉरी बोरिंग कॉस्ट. AS 16 says कि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड में तो आप उस कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हो. उस कंस्ट्रक्शन पीरियड जो है वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. नाउ अब उसको अगर हम इस सिचुएशन में देखें कि मैंने एक रेजिडेंशियल हाउस परचेज किया और बैंक से बोरिंग करी, मैंने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया जिसकी मेरी जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी है वो लेट्स सपोज 10 लाख रुपीस है एक साल की. अब 10 लाख की जो मेरी इंटरेस्ट की लायबिलिटी है, रेजिडेंशियल हाउस तो मैंने परचेज कर लिया, मुझे पोजीशन में मिल गया, रेडी हो गया, मैं शिफ्ट कर गया उसके अंदर, और 10 लाख रुपए मेरी इंटरेस्ट की लायबिलिटी है. उस 10 लाख को मैं कैसे ट्रीट करूंगा? अब वो 10 लाख रुपए मेरी जो सेल्फ ऑक्यूपाइड इनकम है वो मैं उसमें 24B में डिडक्शन नहीं ले रहा उसकी मैं, तो कैन आई कैपिटलाइज दिस इंटरेस्ट? नहीं. ऑनली ऑफ यू से नहीं कर सकते हो. उसमें क्या होता है? क्वालिफाइंग एसेट कहाँ हुआ? मैंने इसीलिए तो सारे फैक्ट्स एलैबोरेट कर दिए. ये 16 में बता दिया, फैक्ट्स में बता दिए. अब ये क्वालिफाइंग एसेट कहाँ है? मैंने तो घर का पोजीशन, घर परचेज किया, रेडीमेड प्रॉपर्टी, उसमें मैंने शिफ्ट कर लिया और उसके बाद उसमें मैंने रेंट पे किया, तो क्या होगा? अब आप AS 16 को भूल जाओ. वो AS 16 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग के लिए. अब आ जाओ इनकम टैक्स के ऊपर. अब इनकम टैक्स में ये जो 10 लाख रुपए मैंने इंटरेस्ट पे किया, मेरी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, मेरा 24B में कोई मेरा जीरो वैल्यू है तो कुछ नहीं होगा, तो उसको क्या करूंगा मैं जो मैं 10 लाख रुपए इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ? कैन आई कैपिटलाइज दिस? इसके ऊपर डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले वाला वो कैपिटलाइज वो तो हम AS 16 में चले गए ना, फिर वापस बोरिंग कॉस्ट को चलेगा. अच्छा, इसमें क्या है कि एक ना there is a judgment of Delhi High Court in the case of मिथिलेश कुमारी. वहाँ दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई अगर किसी ने प्रॉपर्टी परचेज करी है, अब सपोज करो उसने 10 लाख में इंटरेस्ट दे दिया, 2 साल बाद उसने प्रॉपर्टी सेल कर दी. अब उसने जो प्रॉपर्टी सेल करी, अगर उसने 1 करोड़ की ली थी तो 1 करोड़ 5 लाख की सेल कर दी. अब हाई कोर्ट के पास जब ये मिथिलेश कुमारी का केस गया तो हाई कोर्ट ने कहा, दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि भाई 1 करोड़ की उसने प्रॉपर्टी परचेज करी, 10-10 लाख रुपए 2 बार उसने 2 साल से वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो उसकी तो कॉस्ट जो है वो 1 करोड़ 20 लाख हो गई. अब उसने सेल करी है 1 करोड़ 5 लाख रुपए की, तो गेन कहाँ है? 5 लाख रुपए, 5 लाख पैसे आप देखो तो गेन 5 लाख का है, बट इंटरेस्ट भी तो पे किया उसने, सो देयर इज नो गेन. दिस इज व्हाट मिथिलेश कुमारी हेल्ड. इसका मतलब ये हो गया कि मिथिलेश कुमारी की जजमेंट में दिल्ली हाई कोर्ट ने इंटरेस्ट जो था वो उसकी डिडक्शन अलाउ कर दी.
So you read that particular judgment, that is something beyond AS 16. AS 16 is accounting standard for borrowing cost, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट वेंट बियॉन्ड दैट. दिल्ली हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा कि भाई कंस्ट्रक्शन पीरियड है, उन्होंने एक सिंपल लॉजिक लगाया कि भाई जिस बंदे ने एसेट परचेज करी है वो आज सेल कर रहा है, इंटरेस्ट भी तो उसकी कॉस्ट है ना, तो उसमें जो अगर इंटरेस्ट से कम अगर उसको प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट कहाँ है, प्रॉफिट तो नहीं, उसको तो एक्चुअल लॉस है. अब मित्रेश कुमारी ने ये फर्दर सेड if only that much portion of interest should be considered for the purpose of computing capital gains, which has not been allowed as a deduction under any other provision, because deduction तो आपको 24B में भी मिल सकती है. You can have जो दूसरा सेक्शन है कौन सा इसके ऊपर जो 80 डिडक्शन वाला चैप्टर है 80E. 80E. चलिए, so I mean and then 80E or there are a few more sections. I mean it can be even under section 36 37 में भी हो सकता है कि भाई मेरी वो बिजनेस एसेट है, अगर मेरा बिजनेस एसेट है और मैं उसको मैंने फैक्ट्री बिल्डिंग परचेज करी और मैंने उसको फैक्ट्री के लिए यूज कर रहा हूँ, इंटरेस्ट मेरे को जो है कैन बी अलाउड एज एन एक्सपेंस आल्सो. अगर मैंने एक्सपेंस क्लेम कर लिया है फिर तो मैं उसको कैपिटलाइज नहीं करूंगा, अगर मैंने एक्सपेंस क्लेम नहीं किया तो उसको मैं कैपिटलाइज कर सकता हूँ. So I think this law was already there. To the extent interest which has not been allowed as a deduction under any other section, it can be capitalized. Now they have clarified this in section 48 कि भाई अगर आपने उसकी deduction claim कर लिया तो आप capitalize नहीं करोगे. पहले क्या dispute होता था कि पहले ये होता था कि भाई कहीं पर interest को capitalize करने के लिए specific कहीं provision नहीं था income tax act के अंदर. With the insertion of this exception in 48, it can be legitimately जो है construed कि balance amount can be capitalized. So then what's the relevance of the 24B? Because after 24B, if you have acquired the property for like you are using it for your own purpose, so One it lakh can be rupees. allowed up to the 30,000. So up to you are saying like you have paid the interest 10 lakh का करके और 30,000 you can claim in a year. तो ऐसे तो जो balance होगा I can claim it ऐसे बात नहीं लगती जब when I'm selling my asset. हाँ तो तो उसका तो कोई relevance नहीं होगा फिर 30,000 का. नहीं 30,000 का relevance ये हो गया कि वो तो आपको allow हो जाएगा from your other income as deduction. Means I can also 30,000 है 1,50,000 है वो. 30,000 So 1,50,000 किस चीज के लिए हो जाएगा? नहीं 1,50,000 2 लाख प्रिंसिपल अमाउंट नहीं 2 लाख हो इंटरेस्ट गया कंपोनेंट आल्सो. हाँ अब 2 लाख नहीं लेट आउट पे तो लिमिट ही नहीं है, सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए. हाँ चलिए 30,000 की लिमिट पहले थी which was increased to 1,50,000. Now I'm sure it must have been increased beyond that. So are we not claiming that deduction self occupied house property में से जो उसकी. So what you are saying is कि अगर 10 लाख मेरी टोटल इंटरेस्ट बर्डन है तो आप ये कह रहे हो कि वो जो भी लिमिट है चाहे 1,50,000 है जो भी लिमिट है उसकी क्या सैंक्टिटी है. वो 1,50,000 तो अगर आपकी सैलरी इनकम है तो आप उसमें से भी वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हो आउट ऑफ इंटरेस्ट पेड आउट ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का. तो आपकी यू विल पेइंग टैक्स ऑन द लेसर अमाउंट. ये तो ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग योर कैपिटल गेन्स है. अगर आपका कैपिटल गेन्स होगा तो आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा, नहीं होगा तो आपको नहीं मिलेगा, फिर कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा. सो दे बोथ ऑपरेट इन डिफरेंट एरियाज. कैपिटल गेन ये कहना चाहते हैं 10 years 20 years हो इंटरेस्ट अमाउंट सपोज 10 लाख है, मैं 2 लाख की एजेंसी 24B में ले लेता हूँ और बैलेंस 8 लाख को कैपिटलाइज कर देता हूँ, तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट बेनिफिट तो मैं ले लूंगा. कहाँ लिया मैंने, इनकम के केस तो सेट ऑफ नहीं लिया ना, कैपिटल गेन के केस लूंगा. कैपिटल गेन के तो सपोज करो मेरी सैलरी इनकम है, सैलरी के केस तो मैं खाली उतना ही बेनिफिट ले रहा हूँ ना. फिर बैलेंस आपने कैपिटल गेन के अगेंस्ट लिया, जब सेल होगा तो बैलेंस वहां ले लो. वो वही एक ये पता क्या है, ये मेरी बहुत सीएस के साथ डिस्कशन होती है इस टॉपिक के ऊपर. सीएस का दिमाग जो होता है ना वो होता है अकाउंटेंट वाला. वो एएस 16 जितना सोचता है कि भैया ये क्वालिफाइंग एसेट है तो कैपिटलाइज कर लो, नहीं क्वालिफाइंग एसेट है तो नहीं कैपिटलाइज कर सकते. आप मिथिलेश कुमारी की जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट निकाल के देखो, ठीक है. सो यू हैव टू थिंक बियॉन्ड अकाउंटेंट, बियॉन्ड अपने सीए की डिग्री को छोड़ के एज अ हाई कोर्ट जज के हिसाब से उस जजमेंट को पढ़ो, फिर देन यू विल फील कि वो कर सकते हो. चलिए. Yes, that's about all, or do we have some more topics? That's all. So whatever follow-up has to be done, जैसे वो
आप वाला भी था, जो एडिशनल चीज़ें आपने क्लेरिफाई करनी है वो क्लेरिफाई कर देना, आपके भी जो एक दो चीज़ें थी उसको भी आप वर्किंग कर लेना, नेक्स्ट टाइम आप लोग उसको क्लेरिफाई कर देना। और जितनी चीज़ें हमारी पीछे से बैकलॉग चल रहे हैं वो प्लीज़ आप इसी वीक के अंदर बिफोर वेडनेसडे सारी चीज़ें कंप्लीट कर देना। सो टेम्पलेट वाला आप लोग सबके साथ फॉलो अप कर लेना। और आपका जो है ब्लॉक वाले जिसके हैं वो आप मेरे से बीच में जब भी हो आप लोग रेडी हो या टाइम हो तो फिर तो मैडम को बोल देना, सो शी कॉल यू एंड वी विल कंप्लीट दिस। ठीक है, थैंक यू।